ओके 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, उसके बाद लेट्स फाइंड आउट कि अदरवाइज विल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा फिजिक्स का चैप्टर भी कंप्लीट, बेसिकली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आज इज टुडे वेंसडे ना, आज वेंसडे या यस टुडे इज वेंसडे, वेंसडे। Hi Shweta, how are you? I'm audible? Why they are not joining? Good evening, sir. Good evening, Shweta, how are you? I'm fine, sir. How are you? I'm fine, dear. Thanks so much for asking. Kiran Abdullah. Okay. Hello, Assalamu alaikum. How are you, Abdullah? Walaikum Assalam, sir. I'm fine. Alhamdulillah. Thank you. What about you? I'm fine. Alhamdulillah. Ya Habibi. Yes. Alhamdulillah, Habibi. और प्रिपरेशन कैसी Jawab. चल रही है आप सबकी? Alhamdulillah, sir. Fine. चलो, that's great. What ठीक about चल you, रहा है. Adil and Kiran? Yes, sir, it's fine. Good. Chalo, that's great. Okay, so today is the last topic of this chapter, that is scattering of light, ठीक है। So बस जल्दी से बच्चे ज्वाइन कर लें, so हम लोग स्टार्ट करते हैं, else we will start just in a minute। पता नहीं इस टाइम पे अब सब ज्वाइन लेट क्यों करते हैं। इस टाइम पे तो आई थिंक 5:09 हो रहे होंगे ना सऊदी में। अल्हम्दुलिल्लाह 5 o'clock और होगा, अराउंड Yes, 5:09। yes. 5-9 exact 5-9. 5:09। आप लोग स्कूल से कितने बजे तक आ जाते हो? 3 o'clock तक तो सभी आ जाते होंगे। मैं तो जा ही नहीं रहा सर स्कूल. अब फायदा भी नहीं है ना, कुछ हो भी नहीं रहा होगा ना, एवरीवन इज रिवाइजिंग देयर देमसेल्व्स, वही तो टाइम वेस्ट होता अपने है आप से ही पूरा. वही कर रहे हैं रिवीजन। तो उससे चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके ओके, सो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वेटेड and nobody is joining on the time, so that is not the code of conduct of this class. You know this thing that I'm a very strict person. यस, शो ऑफ के लिए था, स्ट्रिक्ट वगैरह कुछ नहीं हुए। ठीक है, चलो ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाट बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज, व्हाट डज इट मीन स्कैटरिंग, कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी को पता है? देखो स्कैटरिंग वर्ड तो हमने सबने सुना होगा, व्हाट डज इट मीन स्कैटर्ड? स्कैटर्ड, सर स्कैटर, स्प्लिटिंग. Splitting. स्प्लिटिंग इज बेसिकली Like, डिस्पर्जन। so scattering means like if we put बिखरा something. हुआ, yes, it's हाँ. completely randomized, it's not in a fixed direction, it is random, clear? It can go in the various random directions, clear? Scattered, आपने कहा ना मेरे, like my house is scattered, my house is scattered means everything which should like जो आपकी चीज organized होती है, but that is not organized only, okay? So that is scattered. So basically scattering of light means the light particles scattered in such a manner to basically in various directions, random directions, clear? So scattering of light, scattering of light means to throw light in various direction, various random directions, clear?
Okay, clear? Yes or no? Yes. Okay. So basically, due to this phenomena, we are able to observe very different kind of situations in a day itself. So basically, when you have seen this thing that when the sun when there is a sunrise, the sun is very reddish type. Yes or no? It's a kind of little orange, little red when this when it is sun rising. Yes or no? Yes, sir. Okay. But as you can see this thing, when the sun basically rises and it's come to around 10 o'clock, the skies appears to be a little bit blue. Yes or no? But Yes, when sir. the sun basically when there is an afternoon around 12 o'clock or 1 o'clock, the sun up basically the sky appears to be white because of the sunlight. Yes or no? You have seen this thing? So different day, different phases of a day gives you different colors of the sky. Yes, am I right or not? And after once the afternoon is complete getting completed, it's around basically around 3 o'clock or 4 o'clock, it's around again blue. And after that, at the sunset, the sky becomes red or orange. Yes or no? Yes, sir. Clear. And one more thing is that have you seen have I think you must have seen that this if suppose one thing that you are in a very dark room and the room is completely closed, there isn't any light. Okay, but there is a hole in a wall of that room, and a light ray is coming. I think you must have observed this thing like in any of like in any of the situation of your life. How Yes, many of sir. you have done this Final thing? effect. Okay. Yeah. So you have seen this thing when in the ray of light, air particles basically are suspended. Very small dust particles. किसने देखा है डस्ट पार्टिकल्स एक आपका जब रूम क्लोज हो एकदम ब्लैक रूम हो और वहां से सिर्फ एक होल एक छोटा सा होल हो. ओके यस श्वेता वेरी गुड. सो उसमें अगर आप देखोगे लाइट रे जब उसकी जो लाइट की डायरेक्शन होती है दैट इज स्ट्रेट कंप्लीटली और उसमें जो होता है यू ऑल्सो सीन उसमें डस्ट पार्टिकल्स आपके सस्पेंडेड होते हैं उस लाइट में आपको वो चीज ऑब्जर्व होगी. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो द basically is due to the scattering of light. Clear? Yes, sir. Okay. So these are the some basically situations or some actual you can say observations in the real life due to the scattering of light. Clear? Yes, sir. Okay, let's talk about the first one, that is Tyndall effect. Okay. Then we'll be doing the scattering of basically light. Tyndall effect. Okay. So Tyndall effect means the scattering of light particle in its path by basically the scattering of light by particles in its path is called Tyndall effect. Okay. So when the light when the particles basically when the light ray is traveling and the scattering of light due to the particles is called Tyndall effect. Okay. So by particles in its path is called Tyndall effect. Clear? Okay, so basically Tyndall effect is discovered when the basically white light, okay, is passed through a liquid having very small suspended particles. So basically and basically just a second, let me give you first a picture of this Tyndall effect. आप लोग इसको देख के थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर देता हूँ. सो टिंडल इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा. ये चीज ऑब्जर्व हमें फॉरेस्ट में भी होती है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड माउंटेन एरिया इन एनीवेयर वेदर इट इज इंडिया और समवेयर एल्स? ओके, आप कहाँ गए हो श्वेता? Sir, I have went to Jabal in Oman. Like, इट्स अ वेरी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस एरिया. yeah, bought forest. अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. करिश्मा हैज जॉइंड नाउ.
ठीक है. So you can see this thing. This is all this. This is what Tyndall effect. Basically, you can see this thing. Scattering of light by the particles. You can see. Okay, so in this light particle, you have seen these things. Basically dust particles are suspended. Okay. And two regions. Basically, there are two conditions for a Tyndall effect. Okay. Tyndall effect के लिए दो conditions होती हैं आपकी. ज्यादा इसको इतना डीप में नहीं आता है. टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन इज द डस्ट पार्टिकल एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स दैट आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट. सो द पार्टिकल शुड बी मच लार्जर देन द क्लियर विजिबल लाइट. तो चलो सबसे इसका मैं एक और लिख देता हूँ टिंडल इफेक्ट में. टिंडल डिस्कवर्ड when white light is passed through a basically is passed through a liquid solution. Liquid small suspended particles. So you live in Oman, Shweta? Yes, sir. Okay. Particles in it. Then the blue colors is scattered the most. Hi Karishma, how are you? Hello, sir. I'm good. What about you? I'm fine. कहाँ थे आप? Late join किया आपने? At the Yes. most. Hmm. And the red color least scattered. Okay. So red color is least scattered and the blue color is the most scattered wavelength. Clear? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Okay. And let's talk about basically which which size of particle will scatter the basically which light, which color. Clear? So let's talk about the color, the scattered light depends on the size of the scattering particles in the atmosphere.
So A part. So basically, the larger particle of dust and water droplets that are present in the atmosphere, that will basically scattered the white light, such as basically the scattered white light. The particles, let me write it down first. The larger particles of dust water droplets present in the atmosphere atmosphere scatter the light such as such. Due to which the scattered light appears to be white. Okay. So the larger particle will scatter the white light. Okay. B part. So, and the extremely minute particles that are present in atmosphere will scatter mainly the blue light. Okay. Because blue has a very short wavelength. Yes or no? Yes, sir. The extremely minute particles देखो आप सोचोगे कि वायलेट क्यों नहीं। वायलेट की इतनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है कि वो बहुत जल्द वो पूरी मतलब बिल्कुल एकदम स्कैटर होती है तो मतलब वो इतना लॉन्गर ट्रैवल नहीं कर पाती। वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है तो इसलिए लॉन्गर ट्रैवल नहीं कर पाती, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल इन द स्काई। एंड if you take the indigo as well, same goes with the indigo, but blue की wavelength थोड़ी ज्यादा होती है in comparison to violet and indigo. So that's why blue can basically travel a little bit more, and that's why the sky appears to be blue instead of violet or indigo. ठीक है। violet की थोड़ी सी wavelength in comparison to violet sorry blue की wavelength in comparison to violet and indigo is more. ठीक है। such as air particles present in atmosphere scatter mainly blue color, blue light basically, mainly in present in white light. Clear? Is this clear to everybody? Please let me know. Yes, sir. Any doubt? Sir. ठीक है? Okay, that's great. So let's understand why sky is the blue. ठीक है? This is a question. क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ये एक टॉपिक भी ले सकते हो आप। ठीक है। स्काई ब्लू की बात। ठीक है, रुक जाओ यार, स्क्रीन फिर फ्रीज हो गई मेरी। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि मैंने चाह नहीं रहा कि मैं इसको कट करके हो गई चालू हो गई। ठीक है। सो अब इसकी बात करते हैं। स्काई की बात हो रही है तो ब्लू से लिख लेते हैं। वाई?
सर एक लाइन ऊपर जा सकता? ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये देखो यहाँ से। जी 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 उसका। ठीक है, अब बात करते हैं स्काई ब्लू क्यों होता है। सो देखो, अब मैं इसकी एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा उसमें आपको समझ में आएगा व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू पिक्चर में। हो गया अब्दुल्ला, कर लूँ पर? एक मिनट बस एक मिनट। ठीक है, ठीक, देखो। सर एक मिनट बस एक ओके, सेकंड। देखो कोई बात नहीं। अब ये देखो, आप ये फिगर देखो आप लोग, यू कैन सी दिस थिंग इन द, ओके देखो फिगर में, इज दिस आपका सन यहाँ पर स्ट्रेट अप टू द हेड, ठीक है। एंड इट, इफ यू कैन सी दिस थिंग, सनलाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, यस और नो? क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सन है दैट इज वेरी मच क्लोजर टू दिस, बेसिकली आपका इस टाइम पे जो होता है सन थोड़ा पास में होता है इन दी सन, यू कैन से मॉर्निंग के टाइम पे 10 से लेके जब तक वो सन आपके आफ्टरनून और नून के टाइम में सन इज वेरी मच क्लोजर। तो बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो स्कैटरिंग होती है ब्लू लाइट की सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ओवरकम, क्योंकि देखो लीस्ट स्कैटर्ड लाइट इज व्हाट, रेड कलर। रेड कलर स्कैटर ही नहीं हो रहा है, स्कैटर बिल्कुल नहीं होता, बहुत ना के बराबर होता है। एंड इसी वजह से ब्लू कलर सबसे ज्यादा अपीयर होता है स्काई में। क्लियर है? वाई स्काई इज ब्लू? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट द मोस्ट। क्लियर? क्लियर? द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू लाइट component of the white light air molecules present in the air causes the blue color of sky। ठीक है, अब देखो in the space, is there any atmosphere? In the space, is there any atmosphere? Space, I'm talking about the space. Tell me, is there any atmosphere in the space? No, sir. नहीं ना? So, Yeah. So if there is any, if there isn't any atmosphere in this space, so what will be the color of the space? Black, black. Black. Yeah. Why? because there's no atmosphere and scattering won't take place. Yes, because there isn't any scattering of light. Clear? So if there isn't any scattering of light, it means that there won't be any color in the sky. It would be completely dark in the space. Yes or no? Clear है? Yes. Yeah. So अब देखो, सो ये समझ में आया आपको स्काई, व्हाई द स्काई इज ब्लू? बिकॉज रेड कलर आपका स्कैटर नहीं होता इन दी, आपका जो टाइम होता है लाइक अराउंड 10 टू लेके 4 तक का जो टाइम होता है ना, उसमें आपका सन इज मच मोर क्लोजर टू दिस अर्थ। सो उस वजह से क्या होता है,
आपकी जो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, वायलेट स्कैटर इतनी ज्यादा होती है कि वो दिखती नहीं है, बट ब्लू की जो थोड़ा सा वेवलेंथ भी ज्यादा होती है एंड उसकी थोड़ी सी स्कैटरिंग पावर, यू कैन से, वो कितनी स्कैटर होती है वो दैट इज ऑल्सो हाई। सो इसकी वजह से जो आपकी डायरेक्ट जो आपका स्काई है दैट अपियर्स टू बी ब्लू। क्लियर? Yes. Yes. क्लियर? एंड देखो अभी हमने लिखा था ना, माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा माइन्यूट पार्टिकल्स सच एज पार्टिकल्स दैट इज ऑल्सो बेसिकली स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है? यस और नो? Yes, sir. Okay, let's talk about this next thing. If Earth had no atmosphere consisting of air, there would have been no scattering of light, scattering of light at all. ठीक है? Clear? And sky appears to be black and dark. देखो एक रिलेशन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का वेवलेंथ में। देखो एनसीआर, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और यू कैन से स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब आप 12th क्लास में जाओगे ना तब आपको पढ़ने को मिलेगा ये, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द lambda to the power 4. This is lambda. Lambda is the wavelength to the power 4. ठीक है? So it means that higher the wavelength, so lower the wavelength, आपकी जितनी ज्यादा wavelength कम तो ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, सो इट मींस दैट स्कैटरिंग वुड बी हाई। वेवलेंथ जितनी ज्यादा, स्कैटरिंग वुड बी लेस। क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, वाई स्काई इज ब्लू, वाई स्काई इज रेड एट द सनराइज और सनसेट, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, आप ये जरूर ही जरूर लिख देना, ये याद रखना। क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका आई थिंक नेम है रेलेज लॉ, रिलेज लॉ और रिलेज रिलेशनशिप, समथिंग इसका कुछ ऐसा नाम है। आई एम जस्ट रिलेज पता है, उसके आगे का वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा प्रॉपर। आई थिंक इसका रिलेशनशिप है या फिर लॉ है, ये वर्ड इसका आगे का। क्लियर है? Release now. हाँ, रिलेज लॉ। या इज दिस क्लियर? ये आपका 12th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और अभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को डिफाइन करने के लिए दैट इट इज आल्सो वेरी गुड थिंग। ठीक है? दैट मेक्स द गुड इंप्रेशन ऑन द चेकर। क्लियर? ठीक है? Yes. यस और नो? ठीक है? अब देखो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है इसमें? No, if sir. if there is any doubt, please let me know once. ओके, देखो अगर आपके एटमॉस्फेयर होगा तभी तो आपके एयर पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे ना, तभी तो आपकी लाइट स्कैटर होगी। आपका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, सो देयर वुडंट बी एनी स्कैटरिंग बिकॉज देर इज नो पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर। स्पेस में क्या है? स्पेस में पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं, बिकॉज कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल इन द स्पेस विदाउट एनी एटमॉस्फेयर। क्लियर? सो इन आउटर स्पेस, यू विल राइट इन आउटर स्पेस
The sky looks dark. Dark and black. Instead of blue. Clear? I hope this is clear to everybody. Please let me know if you have any doubt. No, sir. Okay. So this is the sky appears blue. Okay, let's talk about why. Why the sun appears red at sunrise सनसेट। ये दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन में आप ये लिख देंगे एंड थोड़ा सा उसमें ये एक्सप्लेन कर देंगे, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर सो देन एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर ये आप लिख देंगे ना तो 2 मार्क्स कंफर्म हो गए आपके। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका सन व्हाई द सन अपीयर्स टू बी रेड एट सनराइज एंड सनसेट। देखो इसकी एक पिक्चर से आप पूरा समझ जाओगे। ये मैं लेट मी पेस्ट दिस पिक्चर कि इसमें इससे आप इस फिगर से आप ब्लू लाइट वाला कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। अब जो सन होता है एट द सनसेट और सनराइज, इट इज एट द लार्ज, यू कैन से लार्जर डिस्टेंस, द मोस्ट फार अवे। यस और नो? यस और नो, प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. ठीक है, अगर हम एक स्फेयर बना लेते हैं, स्फेयर के जो डायमेट्रिकल एंड होता है दैट आर द फारदेस्ट ना। ये डायमेट्रिकली तो हो गया ना। देखो यहाँ पे सनसेट हो रहा है, यहाँ पे सनराइज हो रहा है, तो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गए ना अगर ये स्फेयर है तो। बोलो। Yes, sir. ओनली समर इज आंसरिंग। कोई है नहीं क्या क्लास में? आदिल, करिश्मा, किरण, श्वेता, अब्दुल्ला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखो, अगर ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे सनराइज और सनसेट बेसिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और जो आपके जो सन से बेसिकली आपका जब नून टाइम होता है तो आपका जो सन होता है दैट सन इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू योर आई साइट। यस और नो? एंड यू नो दिस थिंग दैट द रेडियस इज शॉर्टर देन द डायमीटर। यस और नो? अगर आप Yes, यहाँ sir. से देखो, यहाँ से, तो अब ये बताओ एट इन द सनराइज, जब सनराइज होता है तो लाइट को सबसे ज्यादा ट्रैवल करना होता है। यस और नो? सनराइज में, क्योंकि इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ, तो सनराइज में जब लाइट को ज्यादा ट्रैवल करना होता है तो विच वेवलेंथ विल ट्रैवल द मोस्ट, ब्लू और रेड? Red. रेड, बिकॉज द रेड हैज हायर वेवलेंथ। Yes, sir. क्लियर है? इट मीन्स दैट, अब देखो अगर आपको ज्यादा ट्रैवल करना है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, एयर पार्टिकल बेसिकली द वेवलेंथ ऑफ द बेसिकली आपका ब्लू लाइट जो होती है स्कैटर हो जाती है ज्यादातर बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, बट ब्लू लाइट वो सॉरी रेड लाइट ट्रेवल्स द लार्जर डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज scattered least, that's why we are able to see the sky color as red in the sunrise and the sunset। ठीक है, यही सेम चीज कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है सनसेट में, यही सेम चीज आपकी होती है सनराइज के लिए। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जब सनसेट वो सॉरी सन जो होता है आपका ओवरहेड होता है, ओवरहेड सन जब टाइम होता है आपका, तो उस टाइम पे आपको शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना होता है। देख रहे हो आप, ये लिखा है। तो आपकी जो लाइट होती है वो 90 डिग्री पे आपके स्ट्राइक करती है सनलाइट, सो दैट्स व्हाई देयर इजंट एनी स्कैटरिंग। जब 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है सो कोई डेविएशन, कुछ स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, दैट वुड बी कंप्लीटली वाइट लाइट। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ Yes, इस sir. वाले बीच का पोर्शन देखो आप, यहाँ पे सनराइज हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ अगर आप ऑलमोस्ट, सो यही पोर्शन तो है जहाँ पे आपका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है।
ऑफ ब्लू लाइट? इसी टाइम पे तो आपको ब्लू दिखता है स्काई ऑलमोस्ट, यस और नो? Almost at 10 o'clock, 10 a.m. in the morning and around 4 p.m. in the morning, in the afternoon. इसी टाइम के बीच में तो आपका सन जो होता है दैट इज बेसिकली जो आपकी जो स्काई होता है वो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको ब्लू दिखता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस शॉर्ट कवर करना होता है तो सबसे ज्यादा स्कैटर जो होती है लाइट वो ब्लू लाइट होती है। देखो डिस्टेंस कम हो गया ना थोड़ा सा, अब डिस्टेंस सिर्फ इतना बचा है। सो स्कैटर कम होगी, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस कम ट्रैवल करना होगा और स्कैटर ज्यादा हो जाएगी, तो इट मींस दैट योर स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज रेड लाइट्स डज नॉट स्कैटर। ओके, क्लियर है ये वाला पार्ट? इससे आपको समझ में आया ब्लू लाइट क्यों स्कैटर होती है और रेड लाइट क्यों आपकी सनराइज और सनसेट में ज्यादा हाईली वो होती है? प्लीज लेट मी नो। बोलो, सब चुप क्यों है? श्वेता, समर, किरण, आदिल, अब्दुल्ला, करिश्मा, मुझे नाम लेने पड़ेंगे आप सबके। बोलो, जी सर। आप लोग हो या फिर मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। नहीं, एक्चुअली इट इज रेनिंग इन राइट नाउ इन दिल्ली, दैट्स व्हाई आई थॉट दैट माय नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। इनका आप लोग बोल रहे हो शायद मुझे नहीं सुनाई आ रही होगी, इस वजह से आई वाज आस्किंग कि वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट बिकॉज इट्स रेनिंग इन दिल्ली राइट नाउ। ओके सो जस्ट अ सेकंड, रुको जरा, ये हैंग फिर से, जस्ट अ मोमेंट। सो ये चीज याद रखना, जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी दैट्स वाई आपके जो पार्टिकल्स हैं वो रेड वेवलेंथ को स्कैटर नहीं कर पाते, इस वजह से वो ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करके दैट्स वाई यू आर एबल टू ऑब्जर्व द सनसेट एंड सनराइज एज रेड। बट द बेसिकली आपकी जो ब्लू लाइट होती है दैट स्कैटर्ड मोस्ट, ठीक है? दैट्स वाई द अपीयर्स द सन बेसिकली द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग पावर ऑफ द ब्लू लाइट। क्लियर? चालू हो जा जल्दी, लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। पता नहीं क्यों यार, रैम भी इतनी सही है इसमें और फिर भी स्टिल ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, सिर्फ वन नोट में ही प्रॉब्लम करता है लैपटॉप, अदरवाइज इट्स वेरी गुड। अब या तो वन नोट ज़्यादा ही हैवी है। द सराउंडिंग सन स्काई appear red at sunrise and at sunset because at that time time most of the blue light or blue color present in sunlight has been scattered out ठीक है, scattered out and away
from our line of sight. Leaving behind mainly रेड कलर आपका बाकी रहता है क्योंकि ज्यादातर आपकी लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। सो आपका जो रेड कलर है वो हिंदी डायरेक्ट सनलाइट। बीम reaches our eye, ठीक है, that reaches our clear everybody, please let me know. Sir, what have you written after line of sight? Leaving. Okay, sir. Is this clear everybody, please let me know. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure. Yes, sir. चलो ठीक है, लेट्स चलो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। हमारे पास अभी हैं 10-11 मिनट। किसी को कोई डाउट प्लीज लेट मी नो। No, sir. श्योर, समझ में आ गया? Yes. So this is all about this chapter. Your chapter and the syllabus of physics is done with all the portion that is present in the NCERT. एंड इवन थोड़ा उससे एक्स्ट्रा ही किया है हम लोगों ने, जो भी थोड़ा बहुत कुछ डिलीटेड पोर्शन भी कर लिया हम लोगों ने, सो दैट इफ बाय चांस किसी स्कूल में या फिर मतलब किसी स्कूल में इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चंस आ गया है कुछ भी, सो वी आर एबल टू डू दैट वन, ठीक है। सो कुछ कुछ टॉपिक में जैसे हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक भी ऐसे किए थे, ठीक है। Let's do this one. Person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by lens of power. Now जल्दी से बताओ 2 मीटर के ज्यादा बियॉन्ड वो पर्सन देख नहीं पा रहा है, तो which should be the power? What should be the power of the lens? So Plus 5 diopter, 0.5 diopter, okay, plus or negative? plus Plus, okay, ठीक है, but that is negative. Negative of 5 diopter, 0.5 diopter. क्यों? देखो, it is a myopic eye. It's the person is not able to see the distant objects. Clear है?
So if the person is not able to see the distant object, it means that we will be using the concave lens, and the power basically the power of a concave lens is negative. Clear? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. So it would be power will be equals to 1 by f. So it is equal to negative of 1 by 2. So it is coming out to be minus 0.5 diopter. Next question. Student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in his text. Which of the following statement is true? Option A. Option A, the near point recedes has of I has receded away. It's very good, correct. Because the person is not able to see the nearby objects. It means that the near point has been shifted towards the infinity. Clear? Now tell me Yes. which option is correct. In if basically the third the ABC is a prism, BC's base is placed in different orientations. A narrow beam of light is incident on the prism as shown. In which of the following cases, after dispersion, the third color from the top corresponds to the color of square, which is blue? सोचो सोचो. Option A. 1. ओके, श्वेता से ऑप्शन ए. बाकी लोग? Yes, sir. Option A. अच्छा, अगर ऑप्शन ए याद करो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जब हमने किया था, अगर हम ऑप्शन ए करते हैं तो यहाँ पे आपका ब्लू कलर नीचे से थर्ड आ रहा है. इट्स आस्किंग फ्रॉम द टॉप. सो द बेसिकली Option. द प्रिज्म शुड बी इन्वर्टेड. दैट इज ऑप्शन बी. क्लियर है? Yes, sir. So you can see these questions are very good in terms of concepts. Okay. At noon, the sun appears to be white as light is least scattered. All the colors of the white light scattered away. Blue color is scattered the most. Red color is scattered the most. बताओ कौन सा है? जल्दी जल्दी जल्दी. All colors scattered away. Option A. Option A. श्वेता said A, समर said B. करिश्मा, अब्दुल्ला, आदिल, आप तीनों को क्या हुआ है आज? आपकी तो तरफ से Sir, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा. करिश्मा, क्लास में हो? yes, sir. क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या चैप्टर? क्लास जो टॉपिक हुआ है? नहीं सर आ गया. फिर क्या बात, आज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो क्लास में? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है सर. ठीक है, रिस्पॉन्ड करो क्लास में. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि लाइट सबसे ज्यादा कम स्कैटर्ड होती है क्योंकि इट्स कंप्लीटली परपेंडिकुलर. सो देयर इजंट एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बहुत लीस्ट स्कैटर्ड होती है, ना कि बराबर. ठीक है? दैट्स व्हाई ऑल द कलर्स आर प्रेजेंट इन वाइट लाइट. दैट्स व्हाई इट इज अपीयर्स टू बी व्हाइट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? बताओ क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन. Sir, option Mr. C. B. Option C. ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. ऑप्शन सी बाय श्वेता. अब्दुल समर, यू सेड बी. बी और डी? B. बी, रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्जन, देन टीआईआर. ओके, सर -C. योर इज सी. ओके. ओके, सो बेसिकली सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है आपका जब आपकी लाइट 90 डिग्री पे डेविएट होती है. ठीक है? इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपका, जस्ट अ सेकेंड.
इंटरनल नहीं नहीं टोटल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो जस्ट अ सेकेंड, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, ठीक है यार, बी बी होगा, सॉरी वो इसमें इंटर ये वर्ड नहीं पढ़ा था मैंने, यहाँ पे टोटल है, सो दिस इज बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Twinkling of a star is due to the atmospheric. B. B, option B. Refraction of light by different layers of varying refractive indices. The clear skies appears to be blue because Option A. uh, absorbed by in the atmosphere are absorbed violet and blue scattered much more than the other light. Light of other colors scattered more than the violet light. So what about rest of you? Like Shweta said, I think option A, na Shweta? Yes, sir. Okay, C. okay. Summer said C. Sir, Sir, C. C, sir. Okay. बाकी सबका आंसर कुछ? Option C. Option C. C is the correct one, dear. It is not getting absorbed. It basically scattered more than other colors. Clear है? Okay, ठीक है. sir. So which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Red light move fastest. Blue light move faster than green light. All the colors of white light move with the same speed. Or yellow light moves with the mean speed of that of red and Sir, violet light. Option A. Sir, option A. Okay. sir, कौन? H. अच्छा क्या बात, अब की बार आंसर तो सबका फास्ट आ गया। ऑप्शन ए। और बाकी समर, व्हाट अबाउट यू? I don't know, sir. डोंट नो। सब गलत हो आप। ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट Sir, I लाइट, had a इट्स confusion आस्किंग between अबाउट A and C. एयर। एयर कोई एयर आपका कोई आपके एयर का वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ना? बोलो। अगर व्हाइट लाइट डिफरेंट, अगर आपके जो डिफरेंट कलर्स है वो डिफरेंट स्पीड से चलेंगे एयर में, तो आपकी व्हाइट लाइट, आपकी जो व्हाइट लाइट है वो तो पहले ही डिस्पर्स्ड हो गई। आपको व्हाइट लाइट वो दिखेगी नहीं, क्योंकि डिफरेंट कलर आपको रेड बाद में, पहले बाद सबसे पहले दिख रहा है आपको ब्लू, फिर Sir, C. ग्रीन, फिर ये, फिर सबसे एंड में आपको रेड आ रहा है पीछे से डेजर्ट के तौर पे। लो मुझे देख लो, इज इट पॉसिबल? No, sir. नहीं ना? हाँ ठीक है। अब I देखो had डेंजर। a Sir, doubt B. with Sir, B. C. यस समर, यू सेड समथिंग? I had a doubt between C and A. That's why. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। The dangerous signals installed at the top of tall buildings are red in color. These can be seen from a distance because B. be scattered the least by smoke or fog. Very good. B is the correct option because it is scattered least. That's why it can be seen very far from the uh, distance. Clear? Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sunset or sunset? Dispersion, scattering, TIR, refraction of a light. Reflection of light. जल्दी जल्दी बताओ। Yeah. Scattering of light. Scattering of light. Simple सा question है। The bluish color of the water in deep sea is due to Option B. Reflection of sky water. option B by Shweta. What about rest? Scattering of light. Sir, scattering of light. Scattering of light. Scattering of light. Yes, it is a scattering of light. Scattering of light. Clear? So when the light ray, when the light ray enters the eye, most of the refraction occurs at the crystalline lens, outer surface of cornea, iris, pupil. याद करो, ये फंक्शन में बताया था मैंने आप लोगों को, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। B. B Option by B. Samar. B by Shweta. Yes, it is B. Cornea basically refracts the 65 to 75% of the light. The focal length of eye increases when the eye muscles Are relaxed and become thinner. okay. Samar said A ना? A आपका? Yes. Sir. ओके जल्दी से बताओ आप लोग, फिर उसके बाद आई हैव टू एंड द क्लास। Yes, sir, A option.
Yes, very good. Because when the lens is thin, that's why the distance, focal length is higher. Clear? Okay, so which of the following statement is true? A person with myopia can see the distant object clearly. Person with hypermetropia can see the nearby objects clearly. Person with myopia can see nearby objects. Person with hypermetropia cannot see distant objects. जल्दी से बताओ कौन सा correct है? Sir, Hmm? C. Option C. Person with myopia can see the nearby objects clearly. Sure हो? B भी correct है. B भी correct है. Hypermetropia can see the nearby objects clearly. Yes, and C भी correct है. अब यही तो मुझे बताना है आपको. आप बताओ ना. मैं तो करेक्ट आंसर भी बताऊंगा आपको. Sir, पहले आप B, sir, सोचो. B. थोड़ा सा ध्यान लगाओ. Sir, C option. C. Option C C. option. Okay. बोलो. नहीं sorry sir. C हाँ. Option C. Option C. Very good. Option C is the correct answer. क्लियर है. अब इसमें कोई डाउट इस चैप्टर में प्लीज लेट मी नो. आप लोग देखो, मैंने इस चैप्टर को जो ना बहुत ब्रेक डाउन किया. मतलब इतना बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, हर एक चीज को छोटा छोटा ब्रेक डाउन किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटरली in a better manner. Clear है? So please let me know if you have any doubt. Please let me know once. No sir. No, sir. No? Okay, so congratulations.